Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will contest next month's assembly election from his stronghold, the Gorakhpur urban seat, and not the temple town of Ayodhya or Mathura as speculated earlier. On Saturday, the BJP held a press conference in Delhi and announced its plans for the UP elections. BJP has named candidates in 107 seats. The party won 83 of these seats in the previous election, winning MLAs from 63 of these seats have been retained, with just 20 new faces, a significant departure from party's usual formula of dropping 40% of sitting MLAs to beat anti-incumbency. The BJP's first list has Yogi Adityanath, Gorakhpur City, Keshav Prasad Maurya, Sirathu, Shrikant Sharma, Mathura, Pankaj Singh, Noida, Mriganka Singh, Kairana, Suresh Rana, Thana Bhavan seat, Yogesh Dhama, Bagpat, Sangeet Som, Sardhana, Nand Kishore Gurjar, Loni, Bibi Rani Maurya, Agra Rural, the former governor of Uttarakhand. आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे. On Yogi contesting from Gorakhpur, SP chief Akhilesh Yadav quipped that BJP has sent Yogi Adityanath back to his home in Gorakhpur even before the results. कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे. मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया. अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा. अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है. Meanwhile, the Bhim Army chief Chandrasekhar Azad, who met Akhilesh on Friday, made a dramatic U-turn, calling Akhilesh anti-Dalit and saying there would be no alliance with the Samajwadi Party. अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे. और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया. ये दुखद है. Akhilesh Yadav has now announced he will not be forming any other alliances or absorb any more leaders wanting to quit the BJP. समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी. 2 सीटें पूरी दे दी गई थी. उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया. अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता. और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं. On the occasion of her 66th birthday, BSP chief Mayawati released a list of 53 BSP candidates by holding a press conference and said that the law of defection should be more strict. BJP has never lost in Gorakhpur seat from 1967, which makes this seat very safe. Yogi Adityanath will be the candidate. This will improve the chances of BJP in eastern UP, especially after Swami Prasad left and joined Samajwadi Party. Harishankar Tiwari, who is a strong Brahmin leader, he is also with Samajwadi Party. This will help BJP to grow and defend themselves in eastern UP. In Lucknow with Bilal, Saurabh Shukla for NDTV.